We spend a lot of time over here. And what I've done today, and what we will do today is, मैंने अपने बहुत सारे कुर्ते शलवार गरारे बहुत सारी चीजें निकाली हैं पुरानी, जो आज मैं आपको दिखाऊंगी. I think you will remember most of the outfits. But what we will be doing today is that I'm going to be styling them. Like I'm going to be पुराने कपड़े को किसी और का गरारा, किसी और की शर्ट के साथ, और फिर मैं आपको 2-3 पहन के दिखाऊंगी और आप लोग डिसाइड करेंगे कि मैं इस ईद पे क्या पहन रही हूँ. And we will also give you guys the chance to win one of my outfits. So let's go. This time, Eid is going to be a little different. I think पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो भी लोग इस वक्त ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे, it's going to be quite different because of course we've been experiencing COVID-19 and we've all been practicing staying at home, and it's tough क्योंकि आप अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उन्होंने तो इस अरसे में अपनी फैमिली को देखा तक नहीं. So it's going to be difficult. लेकिन nonetheless जो भी इस वक्त देख रहा है मेरी तरफ से और मैशन पे हर किसी की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक. I think that if we can, I think it's important कि इस दफा जरूरी नहीं है कि हम मार्केट में जाएं और खरीदें और बाजार में घूमें. हालांकि आई नो ईद का मजा ही है. मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट से बात करी थी और बाबर ने कहा नहीं भाई हम तो नए कपड़े पहनते हैं. एंड आई वाज लाइक हाँ ये तो है, ईद का मजा ही है. बट व्हाट इफ हम पुराने कपड़ों को रीस्टाइल करके एक नई लुक दें. दैट वी कैन डू. एंड द सेकंड थिंग इज दैट जो लोग एक्चुअली नहीं खरीद सकते, जो नहीं जा सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी नौकरियां चली गई हैं इस वायरस की वजह से, आई थिंक मे बी वी शुड ट्राई टू हेल्प देम आउट. I think that's what we can do this Eid, inshallah. So, okay, are we ready? Aye, aye, Captain! By the way, I don't know if you can see, मैंने अपनी चूड़ियाँ भी बाहर ला के रखी हैं. Can you guys see that? बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ मेरे पास, और मुझे चूड़ियाँ कांच की अच्छी लगती हैं. You know, जो आजकल बनती हैं, I don't like them at all. So yeah, I have a thing for chudis. So here I have this Zara Shahjahan की एक कोई लॉन कलेक्शन का कुर्ता. I don't know कौन सी वाली है, maybe last year or the year before last, and a very pretty दुपट्टा. pretty खूबसूरत नेट का दुपट्टा है. और इसके नीचे मैं पहनती तो तंग पजामा हूँ ज्यादातर इसके नीचे, लेकिन हाँ मगर मैं इस दफा तंग पजामा नहीं, मैं ये गरारा पहन सकती हूँ इसके नीचे. राइट? Yes, Amma. Okay. So this is Zara Shahjahan, and this is an old school Fiha Jumshed Gharara. I have worn this on Eid, by the way. मुझे कहीं ढूंढना पड़ेगा. बहुत साल पहले मैं किसी शो पे गई थी और मैंने ये पहना था. इसके ऊपर एक डार्क ब्लू कमीज उसने मेरे लिए बनाई थी. So maybe we will try to look for it in the archives. लेकिन so this is Fiha का गरारा, Zara Shahjahan का कुर्ता और दुपट्टा. I love this. Okay. Yeah? Now I'm going to go try it on. Okay. So, I think it looks nice. But the thing is, when you pick out old clothes and you have been at home, then they're tight on you. So it's a bit tight, but I think it's workable, huh? What do you think? I think it's very nice. Now, मेरे पास कुछ ज्वेलरी है. इनफैक्ट मेरे पास बहुत स्टैंडर्ड ज्वेलरी है जो मैं हमेशा पहनती हूँ. I can wear silver. I'm sure you've seen me wear these. And I can wear gold. I think I should wear gold. Or I could wear like pearl jhumkas अंदर पड़े हुए. But by the way, ये 150 रुपए का है लिबर्टी मार्केट लाहौर से, और ये है 350 नहीं 450. अब याद नहीं आ रहा आई थिंक, बट वेरी चीप. हाँ जी. सो ये हम डालेंगे. What do you guys think? I think it's really nice.
Yeah? Now the next one. Now this is a big one. Okay? ये याद है आप सब लोगों को? Okay, this is the Khirad outfit. ये मैंने पहना था तब जब बारिश हो रही थी और आज अगर ये वीडियो हम टीवी में किसी ने देख ली तो उनको पता चल जाएगा कि ये किसने चुराया है. हाँ, ये मैंने चुराया है क्योंकि मैं खिरद हूँ और ये मेरा है और मुझे अपना येलो भी चाहिए, ग्रीन भी चाहिए. नहीं, ग्रीन है मेरे पास. But basically I couldn't get any of those beautiful outfits. So I stole this one. Now I'm gonna wear it and show it to you guys. It's beautiful. Okay guys, this is special. I'm feeling super nostalgic wearing this. I'm sure कि अब इसका भी हाल बेहाल हो गया. धागे निकल रहे हैं and obviously सिलाइयाँ वो हो रही हैं. But I don't know, there's something so special about old clothes. I don't know. And I think कि अगर कपड़े अच्छे होते हैं ना तो वो उम्र के साथ बेहतर होते जाते हैं. I don't know, there's something about man. That's why vintage. This has that vintage feel to it. Look at it. इसमें मैं गोल गोल घूमी थी, इसमें मैं गिरी भी थी. This is the beginning of Asher and Khirad's relationship, and I have a lot of memories in this. मैं क्या पहनूं? सहर ने सजेस्ट किया था ये. मैंने बहुत पहना है चांद सितारा, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि खिरद कुछ भी नहीं पहनेगी इसके साथ. But that's just me. That's also my silver. Yeah, because they remind me of these earrings which I did wear in Humsafar. और वो मेरी अपनी earrings थी, ठीक है? I had gotten them from India or somewhere and they were really like beautiful. I had worn it with the white जोड़ा. अगर आप वापस देखें तो there are these earrings where I'm wearing a white जोड़ा and there are these big ones. That episode मुझे अतीका ओडो का जो character है उन्होंने मुझे बाहर फेंका था. And she herself improvised and she basically threw my earrings and I was like, no, but I couldn't do that in the scene. But I was like, no, my earrings are gone. I think they broke. Little one, that one broke, but I still have the other one. This is not the joda I can give away, by the way. Yeah, this I am not giving away. I can give everything else away, but not this one. Okay, अब मैं कौन सा पहनूं? So I'll tell you. I tried not to take out everything that's white and off-white क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सफ़ेद और off-white हैं. I like चिकनकारी के जोड़े, इसमें गोटा लगा हुआ. This is Sapphire. I don't know आप लोगों को याद होगा, मैंने इनकी ईद कैंपेन की थी. That is that. This was a present by Amara Khan and it looks really nice if you wear if you do something modern, like white bell bottoms or something and then wear a coat on top. And then, oh hello, this is Umar Saeed. It's beautiful. There's no one like Umar Saeed. 7 दिन की promotions पे मैंने पहना था and Umar gifted it to me actually. So this is my first Hum Award show. I was nominated for Humsafar and I was like, what do I wear? So one of the outfits that I wore was this. And ये मैंने खुद खरीदा था. I went to Body Focus and I wore this. So ये हम देख सकेंगे. In fact, I think I won my award while I was wearing this outfit. Fawad Khan and Myra Khan for Humsafar. So thank you for everyone who voted for us. Really, Humsafar is all about all of you guys. This is very special also because it's mine, I own it.
I do wish I owned a lot of the clothes that I wore for award shows. But so, which one should I try on? Give me some time. Okay. So it took me a little longer because the pants weren't going up. Actually, button nahi band ho raha tha kyunki I have put on weight. So yeah, it was a bit tough, but I managed. 8 minutes. Also, another tip that I realized today was, सहर ने मुझे बताया कि अश्विन महा ने मुझे बताया कि अगर आप लेट के, अगर आपकी जीन्स बंद नहीं हो रही हो या कोई पैंट्स बंद नहीं हो रही हो, तो आप लेट जाएं, लेट के बात करें. It works. Okay, so this is what I'm gonna do. I think this is really pretty. And last time I wore it, I had opened my hair, but I think this time, I mean, obviously, मैं जल्दी कर रही हूँ. Eid pe I'll do a better job. Maybe wear very small little studs or something. That's it. And yeah, and then I'm wearing these heels which I love because they're blue and looks quite nice. So yeah, this is as modern as I'm going to go. I don't think Eid pe मैं इससे ज़्यादा कुछ मॉडर्न पहन सकती हूँ, but I think it's a beautiful outfit. इस्त्री जब होगा तो it'll look really nice. And I wore this for Saad Din Mohabbat in promotions. So this is what we're gonna do. अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि मैं कौन सा जोड़ा पहनूं, ये वाला काला हमसफर वाला या फिर क्या पहना था, या फिर ज़ारा वाला और फीहा का गरारा. So the garara, the peshwas, or this, and should I just announce it right now? Yeah? Okay. So this, which is very pretty, it is a sapphire Eid collection jora. This I will be giving away to a lucky fan. It's beautiful. And actually इसके नीचे आप bell bottoms भी बना सकते हैं या एक white pants के साथ भी भेज सकते हैं. I'm gonna try to find my pants and send them. I don't know if you guys will wear it though, but still, I think it's very pretty. So this is the giveaway. Okay guys, so I'm done. Finally, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं. मुझे शौक है सजने संवरने का, लेकिन इतना शौक नहीं है. अगर मेरा बस चलता तो मैं इसी में ईद भी गुजारती, जो कि शायद गुजारूं. No, of course not. I actually do like dressing up, especially for Eid. It used to be my favorite thing to do. मेरी दादी, I think मैंने ये पहले बताया, मेरी दादी मेरा गरारा या जो भी, उसके साथ चूड़ियाँ, उसके साथ टीका, हर चीज़ बना के मुझे भेजा करती थी, and I would wait for it. Anyway, so here is the giveaway. Like I told you guys before. आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी मैशन से कि क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ों का जवाब देना है, and then hopefully you guys will win. One of you guys will win this. And if there are 2 good answers or 2 fun answers, then I'll give another one of my jodas to you. So yeah, I think this is very pretty and this is something I've worn not too many times. मैंने शायद एक दफा पहना है शूट के लिए. So और शायद एक दफा. That's it. So yeah, I think I've dry cleaned it already. And